as well, because keeping in view the experience, expertise in landscaping, floriculture, and particularly in plant system, that means the quality nursery management program. He will guide you in a better way. I will request you all to see properly what exactly you want from him and how you can excel in the nursery management field, because it's a vast field. For example, if we have only agree is तो बहुत होती है. If the plant is being trained and 1-2 year plant cost is 2 to 5,000 rupees, and if it is 5-6 year plant, then it will cost 1 lakh rupees. So you have to learn different techniques. If you have already, I think, taken up with the previous lecture of Jayapali regarding bonsai and other, but this is landscape where you need bonsai and some plants which are being trained in a good way. हमारे पास दास की तरह है I may request Faisal, because he was basically in charge of commercial sector as well as he is concerned with the Department of Political Development. He has grown a lot of entrepreneurs and he has assisted them through different schemes. I will be grateful if you can share a few words regarding that and how we can take up with that. Thank you. Sure. मेरा नाम शाहिद रसूल है, मैं इस टाइम डिप्टी डायरेक्टर प्रोजेक्ट पंजाब ले रहा। तो हमारा डिपार्टमेंट भी कमर्शियल प्रोजेक्ट को प्रमोट देने के लिए काम कर रहा है। तो जो यहाँ पे मैं मुझे अंडरस्टैंड हो गया, यहाँ पे एफपीओ है आप लोग से, तो वो नर्सरी के साथ डील करते हैं शायद। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यू हैव स्टार्टेड इट, नाउ आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमेन विद इट, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है। जैसे अल्लाह साहब भी कह रहे थे कि जो मतलब हम स्केल के बारे में कह रहे थे, तो
जो आप प्लांट मटेरियल बनाओगे, पूरी प्लांट मटेरियल आपने सीड से बनाया, तो उसके बाद 6 महीने के बाद आप कहोगे कि हम इसका कस्टमर जो है वो ढूंढोगे, आप कस्टमर्स आपको मिलेंगे, आपको सपोज आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो आपको नहीं पूरी हुई, इन द सेंस कि आपने प्लांट्स 1000 बनाए थे तो आपके कस्टमर्स आगे वो उन्होंने 200 ले लिए, अब आप कहेंगे कि 800 तो क्या हो जाएगा। तो प्लीज जो प्लांट्स है, प्लांट नर्सरी का जो आप कर रहे हैं, दिस इज नॉट अ लायबिलिटी, दीज आर एसेट्स, प्लांट्स आर एसेट्स। आज जो प्लांट मटेरियल आपने 200 भेजे हैं कस्टमर को, अगर उनकी रेट आपने रखी होगी 50 रुपीज, तो इसी को आपके पास जब 800 प्लांट्स है उनको आपको नर्चर करना है, तो आपको केयर करना है, तो अगले साल जब उनकी हाइट बढ़ेगी, उनकी ब्रांचेस निकलेंगे, वो और ज्यादा लक्ष्य ग्रोथ हो जाएंगी उनकी। द सेम प्लांट दैट यू sold at 50 rupees, they will give you next year वो 200 रुपए में भी चला जाएगा। अभी सर से बात कर रहे थे हम, अभी लंच करके आगे, तो सर कह रहे थे कि इतनी डिमांड है प्लांट्स की, ट्रीज की डिमांड है, श्रब्स की डिमांड है, पेरिनियल्स की डिमांड है, बट किन की डिमांड है, ये छोटे छोटे प्लांट्स की नहीं। वो कह रहे हैं कि आज जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, आज की जो गवर्नमेंट्स है, आज के जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स है, होटलियर्स है, दे वांट इंस्टेंटली उनको रिजल्ट्स चाहिए। आज इतना फंडिंग हो रही है, वो कह रहे हैं कितना टाइम का है कि हम सैम्पलिंग्स लगाएंगे, हम सीड लगाएंगे, उनको बड़े बड़े ट्रीज जो है 15-15 फीट की ट्रीज, 10-10 फीट की ट्रीज, वो इंडस्ट्री हो जाएगी। तो हमें अपने माइंडसेट को इस तरह से ट्रेन करना है कि हमें वैसे ही जो डिमांड है मार्केट में, हमें वैसे ही प्लांट्स तैयार करने हैं। एंड एवरीथिंग टेक्स टाइम। आप कभी माशाल्लाह आप छोटे हो भी, यू आर इन योर 20s, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। जब आप इस फील्ड में मतलब कंसिस्टेंट रहोगे, पेशेंस रखोगे, और ये रखोगे मतलब मुझे सीखना है, हर आपको एक्सपीरियंस नया चीज आपको सीखने को मिलेगी, उससे आपको एक्सपोजर मिलेगा। ऐसे प्रोग्राम्स को अटेंड करोगे, यूट्यूब सर्व करोगे, बाहर जाओगे तो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, मार्केट को करोगे, एक्सप्लोर करोगे, इन चीजों से आपका माइंड जो है ग्रो हो जाएगा। आपको खुद ही पता चलेगा कैसे हमें फिर आगे जाना है। आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको? सपोज कोई प्लांट है आपके पास रोज प्लांट है, आपने कटिंग से बनाया रोज, ठीक है, तो कटिंग आपने लगाई मार्च में, उसको 3-4 महीने के बाद देखा रोटी हो गई है, उसको ट्रॉली बैग में आपने भर दिया, तो वो रोज आपको उस टाइम भेजोगे आप, तो उसमें आपको 20-25 रुपए का आपको भेजोगे। अगर आपके पास कुछ प्लांट्स रह गए हैं, उनको आपको रखना है कि ये मैं अगले साल के लिए रखूंगा, इनको मैं बड़ा प्लांट बनाऊंगा, तो इस साल जो आपने 20 रुपए में भेजा, अगले साल आपको 100-150 रुपए में भेज सकते हो। ऐसे ही जो एवरग्रीन प्लांट्स है, फ्लावरिंग ट्रीज है, फ्लावरिंग श्रब्स है, उनमें भी मतलब जितना टाइम हो जाएगा, जितना आप उनको कल्टीवेट करोगे, नर्चर करोगे, उतना इसमें प्रॉफिट बढ़ेगा। Thank you, sir. I request Sophie for a quick response because he was working at PA section, the entire PA section. Quick response, the guest will speak. अस्सलामुअलैकुम। हम यहाँ पे जगह हो गया है कि जो एंटरप्रेन्योर एवेन्यूज है फ्लोरिकल्चर में, पर्टिकुलरली नर्सरी मैनेजमेंट में या लॉन डेवलपमेंट में, क्योंकि मैं भी इस कमर्शियल फ्लोरिकल्चर के साथ वाबस्ता रहा और मैंने भी कुछ अपनी आंखों के नीचे भी कुछ सक्सेस स्टोरीज देखी है। मेरे पास एक सक्सेस स्टोरीज है, स्टार्टेड विद, उसके पास कोई एक लड़का आपकी ही एज का, आई वाज वर्किंग इन बारामूला, तो वहाँ के डी साहब ने मुझे फ़ोन करके बोला कि ये इसका फादर मेरे घर में काम कर रहा है, तो ये बच्चा ये बीटेक करके है, बड़ा इंथुसियाज्म है इसमें, तो इसको करो रजिस्टर, इसको ग्रो बनाओ। मैंने बोला लैंड है सर, उसने बोला मेरी खुद की लैंड है, मैं इसको देता हूँ ऑन लीज, राथर साहब के माउंट राथर डीसी। तो
हमने उसको रजिस्टर किया, हमने उसको नर्सरी पर 1 कनाल की नर्सरी दे दी, फिर उसने वहाँ पे स्टार्ट किया। फिर हमने भी उनको जामिया टेक्निकलिटीज थी वो मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप जैसा ही लड़का था, आप जैसी ही उसमें इंथुसियाज्म थी, तो फिर 2-4 साल के बाद मैं वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। तो मैंने किसी ने मुझे कॉल किया कि मुझे यहाँ टर्फ चाहिए बारामूला साइड। तो मैंने वहाँ के मुलाजिम को फ़ोन किया, यार मुझे कोई बंदा है जो टर्फ करता है। उसने उसी लड़के का मुझे एग्जाम्पल दिया, सर क्या बोल रहा था वो उसी से मतलब क्या है, वो बोल रहे थे कि उसके पास आज 15 के 16 बंदे काम कर रहे हैं उसके अंडर। यहाँ पे जो भी लॉन्स में टर्फ करते वही कर रहा है, एंड ही इज अर्निंग उसका ग्रॉस तकरीबन 1 करोड़ टच हो गया नर्सरी में, वो लॉन डेवलपमेंट किया। तो फिर मैंने उससे नंबर लिया, जब मैंने उसके साथ कॉल की, उसने मुझे सक्सेस स्टोरीज अपनी शेयर की ना, मैं हैरान हो गया कि उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए। इसको भी मौली साहब इसको भी पता है उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं। और आज परसों मुझे किसी बात पे बोल रहा था, मैंने यार इसकी कापी ले लो, ये बोल रहे हैं कि मेरा लॉन डेवलप करो। वो बोल रहे थे कि 100 लॉन्स मुझे इन क्यू है जो मुझे डेवलप करने हैं, मेरे पास लॉन की कमी पड़ रही है, स्टॉक की कमी, इतना काम है मैं कर नहीं पा रहा हूँ सर। मैंने कितना 1.5 करोड़ क्रॉस रेवेन्यू मैंने क्रॉस किया है। मैं लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन काम इतना है कि मैं बोल रहा हूँ कि और लड़के आ जाए मेरे साथ इसमें, लोग जुड़े मेरे साथ, और इसमें इतना स्कोप है। मैंने हमारे सामने जो एग्जाम्पल मैंने की, मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आप में वो जज्बा है, इंथुसियाज्म है, मुझे लगता है ये सनराइज इंडस्ट्री है, ये सनराइज इंडस्ट्री है। क्योंकि आप जो घर पे आज आपको पता है इतने बड़े हाउसेस बन रहे हैं, 2-2.5 करोड़ के मकान बन रहे हैं। वो 2.5 करोड़ वाला मुझे इतने फोन्स आते हैं कि मुझे लॉन बना दीजिए, अगर मुझे 20 लाख भी इसमें खर्चा आए। प्लांट्स को लाने के लिए, स्पेसिमेन ट्रीज लाने के लिए, स्पेसिमेन प्लांट्स खरीदने के लिए लोग हजारों में पैसे खर्च करने के लिए तैयार है इन द कश्मीर वैली। आपको इन अपॉर्चुनिटीज को टैप करना है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है जिनको टैप करना है। बाकी शायद साहब ने आपको बोला कि इसमें जो प्लांट मटेरियल जो आप बनाओगे ना, उसको आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। जो पॉलीबैग में प्लांट बिकेगा, सपोज वो 50 रुपए का बिकेगा, अगर आप उस साइड में करोगे काम, आप पॉट्स लाओगे, उसी प्लांट को फिर पॉट में आप बेचोगे, तो उस वो मल्टीपल टाइम्स ज्यादा कॉस्टली बनेगा, पैसा दे देगा। आप समझे मेरी बात? मतलब अगर आप करोगे काम जो हमारे रोज प्लांट्स है या कोई हाइब्रिड फ्लावर्स है, हाइब्रिड सीड लाओगे आप, हाइब्रिड सीड लगाओगे आप, उस जर्मिनेशन करेगा, सीडलिंग बन जाएगी। उस सीडलिंग को आप फिर पॉट्स में ट्रांसफर करोगे, फिर ट्रांसफर करके आप फिर पॉट और फ्लावर वो आप सेल के लिए रखोगे। वो हजारों में, वो एक पॉट की कीमत हजारों में होती है। या जैसे इनाम साहब ने कहा कि लॉन मेकिंग में है, आज जो भी मकान बनाते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हमारे नए मकान के साथ एक लॉन भी होना चाहिए। अब उस लॉन का डिजाइन करना है, उसका लेआउट करना है, उसको लेआउट करना है, उसको ले करना है लॉन को, तो वो उसमें भी बहुत ही अच्छे, मतलब वो उसमें एवेन्यूज है, लॉन मेकिंग में एवेन्यूज है। फिर जब आप उसको लॉन बना के दे दो, उसको फिर यहाँ से सर्विस दे दो कि हम आपको ये मेंटेन भी करके देंगे, हम आपको यहाँ से अपना टीम रखे, हमारे साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में आ जाइए, हम यहाँ पे 490 बंदे को भेजा करेंगे अलॉन्ग विद मशीनरी, में वो आपको मेंटेन भी करेगा। ये भी आज ट्रेंडिंग है, ये भी यहाँ पे आप हो रहा है। यहाँ वेडिंग्स पे फ्लावर्स यूज हो रहे हैं, पॉट्स यूज हो रहे हैं, वो उसको भी हम कैटर कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, खान साहब। रिया साहब से ने सुना, कल रिया साहब से बहुत इंटरेक्शन हो गई प्रोग्रेशन चैम्बर में, कौन सा प्लांट कैसे प्रोग्रेट कर सकते हैं। इट वाज ए लॉन्ग डिस्कशन ऑफ 1 hour plus, so I now request our today's speaker, lead speaker, Jai sir, to kindly take up this further this program. Thank you, sir. Hello.
Good afternoon, everyone. Hope you all had a sumptuous lunch. I will not leave you to sleep. That's my promise. And quickly, in terms of understanding the technicality of nursery. Nursery in the sense, we are not talking about a cut flower here. I would like to start this discussion with a statement that money grows on trees. It was always a fun statement to listen. It's a reality. Throughout this presentation, what you see, this is basically not a gyan. It's actually an experience which has been actually shared to you guys. Only thing what needs to again, I'm reiterating, is to change your mindset. And in the plant nursery, somebody was mentioning it very correctly that you are making your plant nursery for year one, year two, or maybe month one, month two, and year planning, 5-year planning, 10-year planning. More the age of the plant, more the value it gets. The only challenge what you are looking at here is in terms of training, pruning the plant to fit within that standards of the prescribed standards of worldwide nursery. What we are talking here is uh, the way India works, we are at least 100 years to 200 years behind Europe or America. There is nothing called soil in any of the export material. There will be no soil, so you need to get rid of basic idea of soil. Everything is soilless. For the first year, second year, and third year, when you start from growing a sapling through seeds, so the idea is I would request university to intervene to get the seeds imported from multiple sources which are suitable to temperate climate or the subtropical, sub-Himalayan climate, where all these plant seeds are not available because we don't have seed bank. Somebody wanted to do a large scale project, please do a seed bank for a plethora of plant collection from our own ecosystem. 28,700 species of orchids in Himalayan and sub-Himalayan terrain. British not only looted us our money and our power, they also looted this entire plant bank. Now, the whole smuggling happened during British era. All the orchids of the world, whatever majorly what we buy right now, whether it is dendrobiums to all the species of orchids, commercial orchids what we grow, has went one or the other day from British invaded either India or Thailand or some of those areas. All these have gone back to Europe, where they either they bred them to a better quality of flower or shape, size of flower, or keeping quality of flower. It has come back to us. No? Everything they hold as a patent. The challenge now is the people who want to work with the genetic plant breeding and maybe collecting the plants and propagating them, making it to large scale, is looking at an option of setting up tissue culture labs. Orchids can give you a lot of money when you actually propagate them in multi-thousands, like multi-millions. It cannot be 1 to 10 plants. What we are looking today is in terms of understanding growing one size, one shape, one species of at least 1,000 to 10,000. The demand is there are 3 projects in the world which will run for next 10 years of landscape industry. One is NEO, and second one is Darya Day, and third one is Red Sea development in Saudi Arabia. That is what I am talking about in one country. In Saudi Arabia, the overall work will be more than $650 billion for next 10 years of life cycle. We may not be able to cater to even 1% need what they have. They literally are getting through every possible nursery of Africa or South America or Australia, where there is large scale collection of full grown plants. Full grown means 500-year-old, 600-year-old, 5 meter to 50-meter tall trees, whether it is chinar, whether it is ginkgo biloba, they are as greedy as me. Only one comparison. हर चीज चाहिए, पैसा कितना भी जाए लेकिन मिलना सब कुछ. This is what where they are working on. आज
ओवरऑल वर्ल्ड का जो भी स्टॉक जा रहा है, दे आर ओनली गोइंग टू थ्री मेजर प्लेसेस. वन इज मिडिल ईस्ट, इंक्लूडिंग Saudi Arabia. Second is US market, especially tropical species, which goes to your Florida and surrounding of the Florida, because Florida caters to 100% need of entire America, whether temperate or tropical. जहाँ पे and third place where the plant goes is Netherlands. Netherlands not only sell, they also buy. They buy standard materials. So we will discuss lot of things in the morning also in terms of what are the standards. So I am leaving you two large documents. One American standard. One. रूम नंबर 416 किसका है? 16 किसका है? 16 बाहर गया है अंदर गेस्ट हाउस आपका उठो यार आपने लगा दिया रखा नोटिस को चाबी कहां है? नोटिस है मैंने सारे ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. These things Yeah. Let's again concentrate time. ये सब होता रहता है. Where was I? Market in terms of you might be worried कि मैं इतना बात तो कर रहा हूँ लेकिन बेचेंगे कहाँ पे? आप बिल्कुल चिंता मत करना. आपके पास अगर बॉटम है, सोशल मीडिया जो हम बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोशिश ये रहे कि सोशल मीडिया को हम हमारा मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. आज अगर पश्मीना शॉल मुझे कोई कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में चाहिए, आज वो बिक रहा है, इसीलिए रहा है क्योंकि कोई उसको बेच रहा है, कहीं ना कहीं कुछ मिल रहा है. सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपको पूरी तरह से करना है. सेकेंडली, बार बार करना. दिस कैन नॉट बी वन टाइम एक्सरसाइज. मैंने बता दिया, किसने लिया नहीं, अभी मेरे पास रह गया, वो प्रसन्न मूर्ति को ढूंढो कहाँ है वो, उसके वजह से मैंने इतने सारे पैसे डाले, अभी कुछ हो नहीं रहा. मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आप लोगों के लिए. बट व्हाट आर आवर मार्केट प्लेस? मार्केट प्लेस सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा मार्केट ऑफ प्लांट इज नेदरलैंड्स. आप इमेजिन करो, बाहर यू नीड टू मेक आउट अ नोट ऑफ देयर इज अ फर्म कॉल्ड एज न्यू कूप. आप गूगल कर लो, बहुत कुछ डेटा मिल जाएगा. और वो क्या बेच रहे हैं आप पागल हो जाओगे जो बेच रहे हो देख के. न्यू कूप इज द बिग कंपनी which actually project plans. New Coop spelling will be much different. So once you New Coop in Google, you will get the correct spelling. And second company is Backyard. He's 98-year young man who started the business of nursery in Netherlands. And why I am saying he's 98 years young? If you see the enthusiasm, I am not even 1% of it. Looking at him, he actually is the father of 3 nurseries of the world. He set the tone how money grows on tree. It's his famous dialogue. Money really grows on tree. You can buy one size, one shape, one color, same material, like in 1,000 to 10,000. Same copy, true copy of everything. You will see the videos. And outside temperature is minus 20 degrees. In his nursery, which is a glass house, controlled glass house, inside temperature is plus 28 degrees. Why? Because they are all tropical plant words. They are called as project plants. So you have money, you have a large project, you have drawing, you know what you want to do, but you want to do it overnight. The permissions are there. The PQC setup. You also need to understand about plant quarantine setup of every nation. In Europe, it is very clear. It is PQC of Europe. Google, you will get that. PQC of America, US. I'll share you that data. Nursery standards of both Canada as well as US. I'll share you because anybody who's actually working in this environment, Canadian
standards will work for you. And anybody who wants to work in a tropical environment and tropical thing, the Florida American Horticulture Association Florida, their standards will work. So we gradually get into this presentation mode. You might have seen the first tree, what you see on the top is cherry blossom. The whole world goes to Japan for those 7 to 10 days period, and they made it as a celebration. It's a world celebration. जिंदगी में इसका फ्लावरिंग किसी ने देखा नहीं तो आपकी जिंदगी कोई काम की नहीं है. हर फिल्म, हर फोटोशूट, आजकल तो शादियां भी होने लगी है वहां पे. आपके घर पे 3 प्लांट है, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ. मेरी खुद की दोस्त की शादी पे मैंने क्योटो गया था, एक घर उन्होंने भाड़े पे लिया, करीबन 25 करोड़ की शादी थी, 170 गेस्ट थे हम लोग यहाँ से वहां तक जाने में. उसके घर पे 3 ही ट्री थे, लेकिन 3 ट्री इतनी अच्छी तरह से लगा के रखा था और घर इतनी अच्छी तरह से बनाया था. 3 दिन की शादी, संगीत, मेहंदी से लेके शादी का रस्म 3 दिन पूरा किया. इतने सारे करोड़ खर्चे किए सिर्फ 3 ट्री के वजह से. बोलने का अंदाजा ये था, आज अगर जापान को 7 और 8 दिन में $4.57 बिलियन लास्ट ईयर मिला, ये साल तो इसका ट्रिपल फिगर है, ये साल का फिगर है. इतना मिला है. एक ट्री जो कश्मीर से चली थी 1200 ईयर साल पहले, ये झाड़, ये जो ट्री आप देख रहे हो, ये यही की पैदाइश है. काश हम भी कुछ ऐसे सोच पाते. श्रीनगर की एक स्ट्रीट में मुझे भी एक दिख पाती है ऐसा. ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है. ये आपका गांव के लिए अपॉर्चुनिटी है और आपके घर के लिए अपॉर्चुनिटी है. आप में से बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी बड़ी खेती भी हो सकती है, या आप अगर एक कंबाइंड लोग हो, आप ये सोच के चलो, आपको ये साल के लिए these trees are bred for higher temperature now. लोगों की ग्रीड इतनी ज्यादा हो गई है. there is a variety called as kazan. इसमें चबी में kanzan. It actually works fantastically well in Dubai climate for 4 days. पूरा 7-8 दिन नहीं चलेगी, लेकिन 4 दिन मैं चेरी ब्लॉसम दुबई में एंजॉय कर सकता हूँ. रेडीमेड एक ट्री कॉस्ट टू अराउंड 6.5 लाख रुपीस. पूरा का पूरा कैनोपी बना हुआ है, पॉट में रेडी प्लांट है. कहाँ से आता है? टर्की से आता है. टर्की से दुबई शिप होती है फॉर ओनली 10 डेज. वो पूरा धमाका चलता है, पूरा फ्लावर गार्डन बनता है, ड्रीम गार्डन. नो ओनली crores and crores of plants are displayed for that 21 days festival. पहले हमको लगता था कि उल्लू बना रहे हैं हम लोगों को, लेकिन आज लास्ट ईयर मैं भी खुद जाके आया when we were there in the Dubai Expo. It is true. People are ready to spend money on trees. So आप सोचना छोड़ के बनाना चालू करो. उसके बाद नीचे वाली जो झाड़ है, आपके खुद के इकोनॉमी में it is making a lot of progress in terms of कोकेनॉट तो सिलसिला से जो शुरू हुआ था अमिताभ बच्चन का गाना, मैं और आपने देखा हमारे टाइम के. आज कश्मीर पे ट्यूलिप लेके आए, दिल्ली में ट्यूलिप चली गई. इफ समबडी इज वर्किंग ऑन जेनेटिकल ब्रीडिंग, मेरी एक ही रिक्वेस्ट थी सब लोगों से कि हम वो काम करने लायक नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल क्रॉस 50 नाउ. The ones whom you are in your 20s and 30s, you guys can invest changing one sequence which actually can adopt this plant to higher temperature more than 27 to 32 degrees. एक सीक्वेंस चेंज कर पाओ तो पूरी कायनात चेंज हो जाएगी. आपके हर घर कोकोनट बन सकता है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी. लास्ट ईयर दिल्ली के रोड में ट्यूलिप लगा, मेरे सर पे बंदूक रखा है कर्नाटका गवर्नमेंट ने. ये साल कोई भी हाल में उनको बेंगलुरु में ट्यूलिप ग्रो करके दिखाना. मैं बोला यार, एक दिन की, एक रात की शो है. बेंगलुरु में एक दिन से नहीं आता. लास्ट 4 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ. एक दिन 2 दिन उसका चेहरा खिलेगा, तीसरा दिन चल जाएगी. पूरी की पूरी ऑनसेट नहीं होती है, बिट्स एंड पीसेस में होता है. So that means there is an opportunity where we all can tap into. That is, let's go to the second slide. Or else you can give me. Secondly, in terms of global landscape business work,
$400 billion in 2023. Contribution from India is not even in 0.003%. That 0.003% is cut flour, which we supply to a Dutch company because they are the patent holders. You are asking for a cut flour, no? You need to work on directly in terms of bringing in the guys who have the patents or the who have bred those varieties. And you need to have a long-term association with them in terms of 10 से 20 साल का आपका और उनका अग्रीमेंट होना चाहिए. डेली मुझे कोल्ड चेन में आपको इधर Alsmeer is a place where flowers are traded on a daily basis in Amsterdam. Amsterdam से करीबन 40-50 किलोमीटर की ड्राइव पे एक बड़ी सी सेटअप है जहाँ पे दुनिया के सब फ्लावर्स आता है. हाइट मान लो 60% of anthuriums, roses, carnations come from a country called as Kenya, जो 10 साल पहले एग्रीकल्चर मैप पे भी नहीं था. हम सब लोगों को लगता था कि और करने वाले कौन है? गुजराती पटेल. Who are doing that? गुजराती पटेल. यहाँ नहीं कर पाए, केन्या में बैठ के कर पा रहे because land and the labor are much cheaper to handle in Kenya. That's why the large scale production. What is the drawback? Either you need to be a large corporate or you need to be a big conglomerate of cooperatives. Wherein for that you need to have a larger mindset. Cooperative बनाना बहुत मुश्किल काम है भारत देश में, क्योंकि एक से दूसरे की नहीं बनती यहाँ पे, सोच कभी नहीं बन पाती. लार्जर गेम में हम हार जाते हैं बिकॉज हमारा लार्जर इंटरेस्ट की छोड़ के हम लोग इंडिविजुअल पे आ जाते हैं. वी नीड टू लीव दैट. व्हाट इज आवर टारगेट? In 10 trillion economy, I need my 3 trillion. It is mine is what you need to dream of, what you need to start with. Individual छोड़ के larger game पे अगर हम concentrate करेंगे, half the battle is already won because you have a plan in your mind how to proceed. I will not get over into all these technical details because I will leave this data to you guys to go through this. Look at what I have highlighted in green. That is a kind of potential. चाइना में पुशान मार्केट है. एक मार्केट में सिर्फ बोगनविला ही वो लोग सेल करते हैं. वो सिटी इस 300 किलोमीटर के रेडियस में कोई और प्लांट वो बिल्कुल ही नहीं ग्रो करते हैं. They only grow only one plant called बोगनविला. 400 to 800 different variants because species फर्क नहीं, species एक ही है. 800 variants. How variants are created? Variants are created by virtue of injecting the different combinations of growth promoters and regulators. We hardly work on growth promoters and regulators. अगर वो करते भी है तो we work only on some edible crops. So there universities and the institutions need to work on, look at how we produce our own material. Do I have one tree? चिनार के अलावा मेरा खुद का क्या है यहाँ पे? चिनार भी शायद बहुत पुराना इंट्रोडक्शन है. मेरा क्या है यहाँ पे? अगर पाइन, चीर पाइन, जितनी भी चीर पाइन की स्पीशीज है, हम कितने सेल कर पाएंगे? मैं एक्चुअली चीर पाइन को इटली से उठा के लेके आया. मैं जो उठा के लाया इसमें लिखता है आपको आगे वाले स्लाइड में, क्योंकि कहीं मिल नहीं रहा एक साइज एक चीज. कहाँ मिलता है? बेली, दैट इज लॉरस नोबिलिस. We saw one of the species outside, but it's not available in India if at all I want to buy. It's a reality that there is a market, there is a available. How many areas we can actually plant it? In India only, the entire Uttarakhand, Purvanchal, then up to Sikkim, Bengal, Arunachal Pradesh. ये जितने भी 5-star होटल बन रही है वो क्या लगाते हैं? फाइकस स्पीशीज. बिकॉज उनको ये भी पता नहीं कि कहीं और नर्सरी में कोई और चीज लगा पाएंगे. आई एम वेरी हैप्पी टू सी वन मोर पैराडाइज योर यूनिवर्सिटी नो. At least 100 to 150 species I could able to see. Each is worth in $1,000. Only thing is we need to start counting them as a money.
and start quoting them as a business proposition. Let's go to the next. In terms of someone was asking landscape में आप क्या कर सकते हो? Look at one infrastructure project. गवर्नमेंट की जितनी भी टेंडर आती है, टेंडर पढ़ना सीखो, टेंडर भरना सीखो. हजारों करोड़ की टेंडर आती है गवर्नमेंट की. आपका स्टेट का जो रोड की हालत थी 10 साल पहले, आज का रोड का हालत देख लो. अगला 10 साल में और भी चेंजेस आने वाले हैं. हर रोड में देयर इज अ लॉ फ्रॉम नेशनल अथॉरिटी, हाईवे अथॉरिटी. देयर इज अ बुकलेट, इट्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. देयर इज अ डिस्क्रिप्शन फॉर लैंडस्केप there. So there is a complete provision. You also can look at what is the requirement, what are the species. You can influence the local government to add your own species into that system. Garden centers. I haven't seen one single garden center either in Jammu or in Srinagar or anywhere else in the state. So दवा और दारू दोनों जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पे भी मिल जाते हैं, लेकिन गार्डन सेंटर क्यों नहीं मिलता? ये दवा से भी ज्यादा है, प्लांट्स आर दुआ. So make sure, try inculcating. After post-COVID, people have again come back to nature. People have again come back to a place. We all love to have plants in the house. So just try exploring garden center and explore what all garden center. Garden center is not only plants. Garden center is selling a dream. Pots, so preserved plants, so cutlery, so everything you can sell through a garden center. There is a city called as near Malmo. There is a small city called as Lund, and the whole city is only known for beautiful garden centers in Sweden. People go there only to buy garden material. Oh, there is nothing else in that whole city. They only sell garden material. बहुत सुंदर सुंदर गार्डन मटेरियल. That is one thing. Then apart from that, renting plant, public garden, hotel, resort, golf course, landscaping, and then monuments, parks, निशाल गार्डन और मुगल गार्डन को रीटच करना, then redevelop करना. You potentially, these are all areas where you all can enter into. Somebody can sponsor each and every bit of area, get the revenue model what I was speaking to. You can do that in your own districts. It can be any place in the state. It can start turning into a different thing. Streetscape. If Kyoto अगर हम जा रहे हैं only to see one tree lane avenue, why not our own cities? Look at transport corridors, water resources. I spoke about ABC principle. It is a big business. Every other person in Singapore, दूसरा लड़का जो पैदा होता है सिंगापुर में, वो वाटर एक्सपोर्ट होता है, करता कुछ नहीं है, वही डॉक्यूमेंट की रट मारा हुआ रहेगा, उसी चीज को हर जगह करता रहेगा. आपको क्या करना है? आपको ये सोचना है कि आपके टोटल इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में क्या प्लांट ग्रो होता है पानी में. आप कभी देखोगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप कमल देखोगे या लिलीज देखोगे, उससे अलावा कौन से प्लांट आपने देखा होगा केयरफुली? What plant you really wanted it to be commercially exploited? None. And it's business. You just need to open your eyes and ears to look at what kind of thing. Lawn industry is over flooded. I don't recommend. If at all you want to do, look at temperate lawns. For that, you need to import seeds from Australia or from US. Get the help of universities to get those temperate lawn species. Then I already spoke about automation. Automation is a bigger industry to look at. Then the machineries is also a bigger industry to look at. Go to the next slide, please. What you are looking at is the world map here on the hardiness zones. In India, we are still nascent. We don't understand what weather hardiness. If I work in US on any project, if I Google, I work in a zone called as 9A. आप गूगल करके देख सकते हो. आपका जोन आता है 6, 5, 4, 3. जो बहुत ऊपर है, जो हायर एलिवेशन पे है, इट्स अराउंड 3, 4 और 5 के एलिवेशंस पे आते हो. एंड वहाँ का जो अवेलेबल प्लांट मटीरियल है वो अलग है. You need to understand for a tropical area it is about 9A. When you type this in 9A zone, which plants work? When somebody is designing some portion,
Everybody may not be interested in only selling the map. Somebody is interested in doing the design. You need to understand which climate zone you work on. The beauty of our country is we have all the hardiness zones. Go to the next slide, please. Coming to our own country, and our advantage is our population, and buying power is increasing. There was a day during our childhood, we used to wait for holidays, Diwali, Holi, or Ramzan, to get two new clothes. Today, my kids and you guys get every new cloth every day, or two clothes every day. That is a kind of growth what we have seen in last 40 to 50 years in this country. Where do we stand? We will be 1.67 billion population by 2050. We will be the largest population. And population is our weapon, it's our biggest market potential. इमेजिन करो वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन एक ही जगह पे है, दूसरी जगह कहीं बेचना ही नहीं है. Only 1% means आप 100 करोड़पति हो. 1% of people are convinced with your conviction or your dream. You are at least 100 crore worth of man. That is reality now. Go to the next slide. Go. You have already seen this. I don't want to explain much more about it. We all spoke of in length. एक मिनट ना, नीचे वाली स्लाइड पे जस्ट हाईलाइट दिस ट्री. दिस इज कोरिशिया स्पीशियोसा. बहुत पहले इंडिया से इट वेंट टू मैक्सिको. Very old introduction to Mexico by the Spanish people or somebody. दिल्ली की सड़कों पे ये फ्लावरिंग में दिखता है आपको ये वाला Corycia speciosa. It blooms in pink. It also blooms in white. This tree to import from Mexico to Spain to India has costed me 62 lakh rupees. This is the tree which I am talking about. At least it requires 4 to 8 people to hold that tree. There are two here. This is international passengers. One I have put outside the road so that the domestic passengers understand how a 400-year-old Corycia looks like. And they are all grown in pots. These are lifted from the forest, put in the pot, and it is sold to me after acclimatizing for 22 years in the nursery. It looks like Adansonia distata, baobab jaisa dikhta hai. Go to the next slide. Go to the next slide. This is Changi. This is where all the landscape as an industry started worldwide. They put up this is Jewel, a shopping complex in front of the Terminal 3 of Singapore Airport. Purely, the entire country runs only on landscape, is Singapore. Go to next slide. This is again a tropical forest walk in Singapore. You just go there, spend $70 to $100 ticket to walk for 2 to 3 hours. Go to next slide. It is a railway station on the top. What you see is a central railway station. If you go to Paris, go to this station. It's a central railway station. It's very crowded, very big railway station, very old, nearly very heritage structure. The need is to bring in forest kind of feel inside an old railway station. Though literally they put trees in a pot hung from the ceiling. It's called a levitating forest. Levitating means hanging forest inside an old railway station. This is madness. This is true. This is happening, and this is money. Go to the next slide. Again the same thing. This is a city also. This is a light fixture also. This is a forest also. Go to the next slide. This is $4 billion has been spent on one office only to make a tropical rainforest in the campus of Amazon. Jeff Bezos' office, $4 billion. 90% is only on landscape. So go to the next slide. This is the entire office. Outside temperature is in minus,
inside temperature is plus 24 to 28 degrees. Look at the plant palette, complete tropical. Outside is snowing. That's the kind of opportunity we also will get here. Our cities are growing. People are coming here for investment. Only their aspirations are quite high, and you always see that there is a foreign FDI, directly foreign direct investment is coming in every other city of our country. We need to keep our eyes open in terms of opportunities. Go to next slide. Now, there's a huge document about the standards. I was talking about in the world, whatever you want to sell, whether it is ground covers, shrubs, trees, palms, or flowering trees, they don't need soil. So you need to understand the soilless media, which are standard. Europe has a different standard. America has a different standard. For America, cocoa peat is allowed. The peat bog is allowed. Peat moss is allowed. You need to cultivate a habit to plant. How does that work? Is we have already seen a growing cups where seeds are sown and seeds become sapling. After when they attain a height of 6 inches, they are taken out from the grow media. It is transferred to the pot. What you need to do is you need to allow pots in such a way that taproot is allowed to grow longer and cut all the branches. For trees, there are two standards. I'll explain more about trees because trees is a larger revenue. Full standard is 2 meter 400. 2 meter clear, 400 on the top. In the 400, the branches are also defined. 4 branches will fetch you $6,000. 14 branches will fetch you $12,000. But height is full scale. This is full scale. Half scale for plants like nerium. Nerium, actually I saw nerium in the street here. So nerium is one sturdy crop we all can explore. There are 17 or 18 different colors, but we never grow them in the standard. Half standard is 1 meter 200. 1 meter length, 200 mm on the top canopy, 6 branches to 12 branches in the blue. It is trained like a tree. So for a japonica, if you see outside in the garden, the way they have trained it, the trees and the shrubs are trained like that. The minimum cost starts with $400. For a shrub, nearly $400 क्या होती है? बहुत बड़ी मनी होती है $400. Imagine you are exporting a container full of 20,000, 30,000 of this standard material to any country. This is definite possibility because मैं खुद ही उठा के लेके आया क्योंकि मेरे पास standard material available नहीं है. I shipped it from Turkey. I shipped it from no, this one from Italy. Go to next slide. In terms of this document, I will give you. I will not get in detail because it over 5 minutes लगेंगे मुझे बात करने. It is deciding. Look at the general standards of everything. They define it. Then shade and flowering trees. The clear definition here. 2 different opportunities: shade-loving plants and flowering plants. Then deciduous shrubs. Then evergreen shrubs. Conifers. Conifers is where we all have an opportunity in Srinagar because you at least see around 15 to 30 different species of conifers doing fantastically well in this campus. That means we only need to grow them more as standard. Go next slide. Then broadleaf evergreens. In the sense, the definition to each standards they have gone in depth to define at a leaf level. Then the roses, then young plants. Young plants sell from a range of $4 to $40. Young means a thin pencil thickness plant which is straight, no branches. They don't allow any branches to come out because why standard operate is they are used in a particular manner. When we stand tall, we need a clear height of 2 meters. When we are sitting down, scientifically we can see up to 1 meter 200. So the idea of standardization is
on the visual basis. Jungles may not be like this, but all aesthetical curated parks, curated gardens are all operate on a standard. Go to the next slide. Very clear definition. Measurement and the rates also are defined on the caliber of a plant. Extremely standard. You can Google down to define how much you need to sell, what rate you want to sell a sansevieria, what rate you want to sell your standard tree of chinar. The rates are also defined worldwide. So there are buyers, the rates are standardized. Go to next slide. This is about deciduous shrubs. Next slide. They also define about which branch to trim, how to trim. While you have a tree which is having a branch at say around below the standard, which branch to cut? Look at the definition here. They are very clear which branch to go, how to go. That is the level of expertise and the definition of it. We should have learned it as a students in our course, but we could not. But I am putting my wholehearted effort in terms of bringing this as a separate course altogether. Go to next slide. In terms of in-ground, how do they do it? You cannot achieve the growth of plant in pots. So what they do? They develop all these plant material in the regular soil medium. Imagine you have an order to supply 10,000 plants, say by 4 months in a year. Everything is time defined. They give you an advance. How does it work? I take out a tender, I select X party to deliver me that based on your rates, and I give you a timeline, 4 months timeline. So in that 4 months, you will get rid of your soil. A chicken mesh is actually put to the plant, root base. It is gradually expanded. हर साल में 2 बार आप उसको निकालोगे रूट बॉल को, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते जाओ. प्लांट बढ़ता रहेगा, हाइट स्टैटिक रहेगी, ब्रांचेस ठीक ठाक रहेगा, आप उसको सिर्फ ट्रेन प्रूव करते रहो. Okay. इसको you are preparing the plant. There is a definition for all that also. See, there are simple tools which are available now in the Europe where there is a bog soil. In the Indian climate, maybe we have alluvial soils here, so it is still a better place to work. But when it comes to arid climate towards down south, these machineries won't work. You need again an Indian jugaad there. Before taking out a plant, 4-5 दिन पहले आपको 2-4 टैंकर पानी डालना सीखते, ताकि that area becomes soggy and blade को एक separate angle देके support करना पड़ता है, because कहीं पत्थर आ जाए नीचे तो blade न टूटे. ये मेरी खुद की एक पूरी की पूरी वो मशीन जो है 4 करोड़ की मशीन को, उसके ऊपर हमने और 60 लाख रुपए खर्चा करके पूरा रीडिजाइन कर दिया हम लोग, बिकॉज एक पत्थर लग गया, ब्लेड टूट गई, लोड 4 टन से ज्यादा हो गया, उसका पीछे का जो एक्सेल है वो टूट गया. तो ग्रेजुअली वी स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग उसको. 4 लेबर, एक पानी की टैंकर और एक जेसीबी की सपोर्ट देनी पड़ती है, बिकॉज प्लांट को जब अगर एक ब्लेड रुक गए, देयर आर मिनिमम 4 ब्लेड्स टू 8 ब्लेड सिस्टम. तो एक कोई ब्लेड रुक गई तो आपको मशीन पे 4 करोड़ रुपए आपने खर्चा किया है. इवन इफ यू आर वर्किंग एज अ सोसाइटी, यू नीड टू मेक श्योर दैट मशीन वर्क्स फॉर यू विद एफिशिएंसी. जोर नहीं डालना उसके ऊपर, वो जान नहीं उसको समझता नहीं है. आप और जोर डालोगे बस एक ब्लेड टूट जाएगी. एक ब्लेड टूटा 40,000 रुपीस to be align the blade. Alignment, that whole blade itself costs around 2.5 lakh rupees. So blade टूटना is a गलत चीज. So make sure understand where you are working
how the machineries can work effectively. 2 गाड़ी इंपोर्ट की, हमने बोली नहीं, हमने क्या बोला कि आप हमारे साथ काम करो, ऐसा काम इंडिया में हुआ नहीं है, पहली बार हो रहा है, आप दोनों गाड़ी हमको फुकट में देंगे, आपको जो खर्चा है वो आधा खर्चा आप निकालोगे, हम आपका नाम लिखेंगे। एक जगह वोल्वो लिखा हुआ है, एक जगह पे मर्सिडीज लिखा हुआ है। मैंने एक पैसा खर्चा नहीं किया, दोनों से 20-20 लाख रुपए पैसा वापस, मेरे खुद के पैसे 14 करोड़ रुपए खर्चा हुए ये प्लांट्स निकालने में, लेकिन 40 लाख रुपए में वापस लेके आया, मशीन भी फुकट में ना, सिर्फ पेट्रोल, लेबर, जेसीबी में, लेबर में। यू नीड टू एंटर इन और वोल्वो, अगर वोल्वो को मार्केट चाहिए, वोल्वो का वीडियो है इस पे यूट्यूब पे, आप देख लो, वो कुछ नहीं बात करता, बेंगलुरु एयरपोर्ट पे मैंने ये किया, उतना किया, वैसा। दैट इज एन एडवांटेज व्हाट ही इज गेटिंग आउट ऑफ इट। उसको फुकट का मार्केटिंग मिल गई, एंड पीपल आर कन्विंस्ड नाउ टू टेक दैट मशीन। 4 करोड़ रुपए कौन मशीन लेगा? नाउ पीपल आर बाइंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर फॉर, बिकॉज़ गवर्नमेंट नीड्स ओनली। रोड का डेवलपमेंट चल रहा है, रोड के बाजू का ट्री निकालना अभी कंपलसरी कर दिया, देयर इज नो कटिंग अलाउड, यू हैव टू ट्रांसप्लांट। दैट मींस वन ऑफ यू कैन बाय अ मशीनरी, टेक अ गवर्नमेंट टेंडर ऑफ taking this plant, shifting this plant. Each plant can give you in the range of 30,000 rupees to 45,000 rupees to transplant, maintain for 1 year. Either you sell that plant in lakhs together, or you sell it, you give it back to the original guys if they want it. It depends on the terms and conditions of your tender. Both possibilities are there. Yeah, again, our own knowledge has gone into the government institutional tenders now by sharing the knowledge. In Bangalore Metro, one line, they were supposed to lift 2,700 trees. 17 machines are working day and night to transplant the material. Blades to open up a tree which is 2 meter curve. उसके लिए नया blade बना है. So there is a revenue for Volvo now to think big. 2 मीटर का उसका ट्रंक है, उसका नीचे का रूट जोन जो है इट इज 8 to 10 मीटर। तो रूट जोन उन्होंने क्या किया, ग्रेजुअली वी टुक आउट द रूट बिकॉज़ दीस आर फाइकस, ओल्ड फाइकस पीपल और बर्गर के पीपल बर्गर कैन सस्टेन ट्रांसप्लांटिंग, बट they never wanted a scratch on the tree part, so we use machines very cleverly, redone, and in a better way to say, again not a jugaad, it's actually a scientific way to work. Good. Go to the next slide. This is a specification for shading. Go to next slide. Go one slide back. This slide is quite important. I was specifically put it because what we are talking about Acer. All Acers can do well in this camp. I have seen many Acers in the campus. Cinnamon and ginkgo, liriodendrons, they all can do fantastically well in this environment. Quercus, all are temperate zone plants. Go to next slide. The definition goes to single root system, multiple root system. You need to study this document in a careful way so that you understand what you are getting into. Go to next slide. This is again root ball dimensions on which the rates are also decided. At times it is not on the size of the plant. You are buying the plant in Europe during winter. एक पत्ता नहीं रहता उसके ऊपर. Completely bare barren trees. How do they define the rates? They define by root ball. Rates की definition. जब कट फ्लावर जब ऑक्शन के लिए जाता है, इट इज बेस्ड ऑन द साइज शेप ऑफ द फ्लावर। हियर वेरी टेक्निकल, वेरी साइंटिफिक। रूट बॉल का ये साइज है, ये रेट रहेगा। गो टू नेक्स्ट स्लाइड। प्रोपगेशन एंड कल्चरल हिस्ट्री कोड्स। द एवरी प्लांट के लिए देयर इज अ डेफिनेशन टू ईच ऑफ इट, हाउ इट हैज टू बी प्रोपगेटेड। सर ये आप और 200 साल रहना पड़ेगा, हम दोनों को वापस आना पड़ेगा। तो मैंने और आपने सीखा है
No, that is a you are accepting a mediocre stuff. I don't accept that. नहीं यहाँ से जब बाहर जाता है it goes in the cockpit. यहाँ जो थाईलैंड से भी जो मटेरियल अगर कहीं और जा रहा है, what they do is you get a work order. How does it work? This entire thing works on work order. You get a work order for so many numbers and so much of cost. They give you a timeline of 2 months to 6 months and their particular requirement. How rates are determined is earth of the plant, root ball, and the container in which it is being transported. Open top container is less than $3,000. In COVID period में that went up to $20,000. It is refrigerated container $5,700 to $11,000 depending on how much. If you are buying the large brachychitons from Australia, एक कंटेनर में 4 ही झाड़ बैठता है. Plant cost is around. ये जो स्लाइड आप समझ रहे ये क्या है? Do you understand ये है क्या? आपको मेथड ऑफ प्रोपगेशन पढ़ रहे हैं ना वो सर ने उसने बोला कुछ चीजें होती है कटिंग से, कुछ होती है सीड से, कुछ रूट से. तो जब इतने सर बोल रहे हैं सर्विस ट्रेनिंग जब इंटरनेशनल पे लेवल पे भेजने जाते हैं वहाँ पे पूछा जाता है आपने कटिंग से प्रोपगेट किया इसका अलग अलग रेट्स हो जाता है. आपने समझा तो आप कहाँ बैठे हो यार ये जो है ना स्लाइड को आप सोचो ये आपके लिए लाइक आपकी डोमेन में आप सर को पूछो ना ये है क्या. In morning 67 words, I don't have brought any back of stats from all stats. As in the same fashion, I have lost a lot of the words from stats lost with No, what happens, you know, each plant requirement, climatic requirement differs. Terminal inside is a static environment. The entire terminal holds plants from all types. You cannot transport soil across international borders. Yes, sir. ठीक है. So ये और प्रोटीजर में आता है. Peat में आता है. Majorly world का जो भी plants आते हैं, peat is it's an inert material. Peat में आता है, नहीं तो coco peat में आता है. Completely soilless, not even a single drop of soil. How do they do? Plant quarantine officer come to your nursery. 6 महीने पहले. You have an export order. Plant quarantine officer is an inevitable friend to you. He is an enemy, he is a friend to you also. Every 6 months, if you are selling it to Europe, if you are selling it to America, there will be a committee who will be visiting you frequently. Every zone is marked with a, now I don't buy any palms from Europe. Why? You might ask me why. Europe is completely infested with red palm weevil. A 2,000-year-old palm has been knocked off in Granada, the old in Spain. They were one of the oldest living palms on the in Granada Palace. They all have been knocked out by red palm weevil. And red palm weevil आपको पहचानने आने के लिए आपको देखने की जरूरत नहीं होती, सुनने की जरूरत होती है. क्योंकि रेड पाम weevil आप देख नहीं पाओगे because size wise is very small. पूरा प्लांट मर जाने के बाद ही पता चलता है रेड पाम weevil पे कि प्लांट मर गए. How do you identify in the earlier stage? That's why I say you need to hug plant. You need to talk to plant. When you hug plant, you can hear the sound. It's a chirr sound which actually comes when the initial infection to the plant, and it infests only to palms, and that too all these cold tolerant palms. Very interesting, but you need to understand the physiology and morphology of both insect as well as the host and the infected material. How do you qualify that? The PQC officer will come. You have your nursery, if it is certified for an export-oriented thing, they have a standard norms to check your root zone. They will check the regular infection from which zone, the growth zone, what I defined right now. कि कौन से zone में आप plant propagate कर रहे हो, वो zone की known devils क्या है? Known devils is fungus,
bacteria, nematodes, virus, as well as the perennial pest history is always documented. You need to keep all these documents when you want to export. $6,000 ऐसे ही नहीं करना है वो. It has to be completely disease, pest, everything free. 45 days is the when PQC officer comes, he will select all the export plant. He will keep it segregated. It is completely barricaded and it is fumigated. It gets fumigated and then start loading in front of him. हर जगह जुगाड़ तो उधर भी चलता है, लेकिन this is the process wise it is how it happens. They start loading in front of that officer. The containers get loaded, locked by him. All the locks what we receive is unbreakable. It is unopenable. You need to break the lock. तो लॉक को आपको ब्रेक ही करना है आपके आने के बाद, आपके यहाँ पे आने के बाद. कंटेनर जब ओपन करते हो आप, तो there are standard locks which have to be broken by typical मशीनरी. उसके साथ ही आपको पता चलता है कि बीच में किसी ने ओपन नहीं किया, आपके यहाँ पे आके तोड़ना है, वो वापस नहीं लगा सकते तो उसके ऊपर टैगिंग रहता है. दैट टैगिंग इज ऑन माय बिल. उधर एक टैग है, उसका आधा नंबर यहाँ पे. वो ओल्ड मूवीज में आधा नोट ये स्मगलिंग वाला रहता है. सेम टेक्नोलॉजी बट वेरी सोफिस्टिकेटेड हियर. आधा नंबर उधर, आधा नंबर इधर. वो सिर्फ मुझे पता है, जिसने बेचा उसको पता है. देन दे आल्सो हैव, इट इज सेंट टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हियर एंड इट्स आल्सो सेंट टू देयर government which is actually exporting. So only 4 people have the code. यहाँ पे आने के बाद it is get evaluated again in the port. Port में भी again they keep this material for 3 days to general inspection. वहाँ से material आती है आपके पास, या आपके पास से जो जाती है material, the standard operating process remains same. Go to the next slide. ये communicate in the language for understand. Basically, this is very important for them. If anybody wants to do it, These are standard codes. standard code, because this is important. ये कौन सा है? Second European है ये. What is this? This is a universally accepted material. Universally accepted, but this standard is defined in America. This is an American standard, but it's universally accepted. अगर कोई मटेरियल थाईलैंड से आता है, फिलीपींस से आता है, कंबोडिया से आता है या जापान से आता है, code adherence is all to the same thing. One is about how it is defined as C. In the codal norms, you can actually see here. C stands for cutting. One stands for that is 1 year, and T stands for transplanted, and 2 stands for year. That is the clarity. When I actually sell or when I actually buy, I am looking at this. I am looking at this. I am looking at this, and this determines the selling price. आपके लिए ये बहुत important क्यों है? क्योंकि आप ये मत सोचो कि आपके यहाँ पे 4,000 बच गए. Actually, it is getting elevated from year on year. Like 2 साल का पहले ग्राफ था, अभी वो 3 साल का ग्राफ हो गया. उसका रेट है. जो जीवन आ रहा है ना, वहाँ पर पूरे गैप में ना G2 के लिए. नहीं, G2 आपको डिफाइन करना. दिस इज ओनली ये बहुत बड़ी पेज है. जब मैं ये डेटा आपको दूंगा ना, उसमें ये बाकी के भी आपको मिलते जाएंगे. दिस इज स्टैंडर्ड एग्जाम्पल. इट इज एग्जांपल. ये लाइक पहले वाला जैसा है C1 T2 ऐसे ये जो है ना G1R एग्जांपल है. नहीं अभी C से कटिंग ग्राफ्टिंग. मैं G1 स्टैंड फॉर 2 साल की ग्राफ. रूट आफ्टर फर्स्ट ईयर. वही है ना. जो ये सर बता रहे हैं, सर की मतलब मान लो आपने जो सर ने बताया ना आपको बहुत अच्छे से छोटे है ना. ग्राफ्टिंग बोलते हैं जब ऊपर हम करें कराइसिस 5 है ना. गाइस ये ना ये कर रही है. तो 5 में 5.
अगर पाइवन ची कर ठीक पाची दोयम R1 एम मतलब को पाची कोरनु पाची रूट से को नहीं थी मतलब पाची रूट बड़ी पूरी पात मतलब पाची आ कोर कुल बोर्ड सुमा ग्रेफिट दा चामु कुलिन का रूट नहीं कर पाची तो आप ये आप ये समझ लो ना, आपके पास एक प्लांट की मटेरियल पड़ी हुई है, पहले साल पॉट में पड़ा था, आप ये बोल रहे हो कि अगला साल मैं अभी इसको 10 रुपए में बेच रहा हूँ, पहला साल का मटेरियल है, मैं आपके पास लेने के लिए आऊंगा, आप मुझे ये बोलोगे सर ये 5 साल का है, हर साल मैंने ए पॉट से लेके बी से लेके सी से लेके डी में ट्रांसफर किया है, ये जो 10 रुपए में पहले एक साल का बेचता था, 5 साल का 10,000 रुपए। You have a documented evidences here. आप इसे झूठ नहीं बोल सकते हो। It is very how do I identify आप मुझे चीट नहीं कर रहे? या क्वेश्चन पूछ सकते हो? For example, we are saying, is there any standard? जो इनके लिए मुझे भी समझनी चाहिए। That how many branches should be there in that criteria? हाँ। Because when we are coding it, see what we do. Here we are coding it about the propagation method plus whether it is shown transparent or transparent. How can one add on something so that he can further 500 plant? We import here apple. 500 plant. It is basically based on feathers. 500, 400, 600, 700 rates are on that basis. There is no mention of that how much it is old, how long it is, how it is. So in case of these plants, how we can define that code? This can be more, this will come with there. No, you don't get too much into it. This is only to define the standards. It is all about the plant history. It is not a major defining factor here. It is one of the defining factors to come to. You are telling the history of your plant. आप हिस्ट्री बता रहे हो उनको कि आपके प्लांट इतना कॉस्टली क्यों है, आप ये बोल रहे हो मैंने ये मेथड से इसको डेवलप किया है और इस तरह से मैंने उसको पाल के रखा है, इसीलिए ये प्राइस है। आप प्लांट की हिस्ट्री बता रहे हो, यू आर नॉट टेलिंग एनीथिंग एल्स। How to check? I am the buyer. आप हिस्ट्री बता दिया, how to check? No, that then you go back to standards defined. मैं ये डिफाइन करने लगूंगा तो मेरे को ये 2 साल का कोर्स वर्क है आप सब लोगों के लिए हर चीज सिखाने के लिए, and it is comprehensive. I will leave this data to you guys. Please go through it once. कितना भी boring लगे, लेकिन go through it once so that if some questions arise, please ask them to institute. I will answer on their behalf. यहाँ पे नर्सरी बना रहे हैं एप्पल की, हम सिर्फ इंडिया में बेचते हैं, यहाँ बेचते हैं, जो बाहर से इंडिया आता है यहाँ बहुत सारा एप्पल आता है, बहुत एप्पल आता है, वो पूरा ऐसे ही पॉइंट होता है, ऐसे नहीं बेचते। अगर हमें यहाँ से अब बाहर भेजना एप्पल वो भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सर नियर फ्यूचर में अगले 10 साल में सर कोई ना कोई नर्सरी ग्रो यहाँ से होगा, सर एक कोड They are international standards. They are international standards. I will come to them, which are the agencies who are defining all these aspects. Go to the next slide. Sir, please 8 minutes. Like that. We थोड़ा मैं तुम्हें एक छोटी सी क्लैरिटी देना चाहूंगा। ये आप जो प्लांट ग्रो कर रहे हो ना, उस हाँ देखो सर पहले C1T2 मतलब फिर जो प्लान है वो 1 year in the 4 months C1 ऐसे T2 की बात है 4 months after that S2 T1 मतलब कि S2 का भी वही है मतलब 2 years in the seed then twice ये T1 T2 T1 जो होगा वो होगा 2 ऐसा ये मुझे समझ आ गया।
फिर नीचे वाला अभी हम लेंगे ना M1 T1 ये भी सेम है बट वो G1 एंड R1 जो है ना मतलब वहाँ पे गैप बट देखो ऊपर जो है ना 4 years प्लांट मतलब वहाँ पे 2 years गैप फिर उसके बाद मतलब जैसे वहाँ पे हम लेंगे ना 2 years इन द सीड वहाँ पे 2 years गैप रूटिंग जो रूट है ना वो फिर 1 year वहाँ पे फिर G1 भी किया वहाँ पे G2 भी Don't you understood the I 100% agree with your observation. You need to take don't go by the base value. Go by the coding methodology. Understand how it is coded, how to read about it. तो बताइए ये एग्जांपल है G2 भी हो सकता है अरे ऐसे तो बहुत सारे नंबर भाई ये पढ़ो ना ये क्या लिखा हूँ मैंने ये एग्जांपल है इक्वेशन है Hundred percent, you have every right to ask questions. That too होना चाहिए, correct? It has to be G2 R2. Go to the next slide. Agree? शिपिंग रिक्वायरमेंट जो पीपीसी के बारे में बात कर रहा था इसका भी स्टैंडर्ड्स डेफिनेशंस है इन टर्म्स ऑफ नर्सरी रूट स्टॉक एट टाइम्स यू डोंट सेल प्लांट्स यू आल्सो कैन सेल ओनली द रूट स्टॉक्स यू आल्सो कैन सेल ओनली द कटिंग एंड कटिंग यू नो कटिंग्स की भी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है आपको जरूरी नहीं है कि आपको प्लांट ही सेल करना आपके पास अगर कटिंग बनी हुई है यू एक्चुअली कैन सेल द कटिंग दैट्स द डेफिनेशन हाँ you can do that but इसमें एक ही है there are multi level checks here when the cutting and the grafting and the rooted thing goes no the complexity is more it is as good as growing a rose earning 8 rupees one rose मैं बोल रहा हूँ 8 करोड़ का कमाओ आप बोल रहे हैं 8 रुपए में कुछ तो all the rest this is where it comes this हाँ वो now I explain it to you in terms of how nurseries sell it. Your point of view is this is typical nursery from Turkey, very well known, very famous nursery in Turkey, and zoom करता है zoom ठीक है शेप वो नहीं दिखेगा बैटर नहीं दिखेगा शेप देखो नहीं how does it goes? It goes on the symbolical multitude of languages. Half standard, quarter standard, different variations. You know, cone shape, 3 balls, 2 balls, single ball, chakri style. Grown as a frame or flat frame. Everything sells. Ready-made compound also. Sir, this is for you. What you understand out of this? If you are going to trade, you have to make your website like this. This is for that understanding. That you have a plant, make this type of website, help people that we have this type conical shaped plants, round shape. We have different silhouette, I think. Silhouette, shapes and their structure. So by that, a customer will be attracted. That's the only thing. This is the digital marketing system. Go to the next slide. Somebody was asking who defines standards. These are the guys, these are world bodies who actually defines the international. These are at a global level. It is not defined by persons. It is defined by the organizations and agencies. Very scientifically proved, unbiased, not biased. They are only biased with the typical climate wise or a growth zone wise. They are not biased with anything else. Go to next slide. This is one more agency which is International Plant Propagators Society. It's a society combination of multiple countries here. It is not individuals. Cooperation is with multitude of growers. Now if they may ask, because there I think some food has asked more to them, they are not asking. For example, this is an international society. This is your responsibility, how we can be connected to this. Exactly. This should be your question, and you are just saying what is there. You just ask, you just
that's available. Sir is telling this is society. Now you tell sir how we can be introduced in that system. It's an open world. The way you make new friends out of your Facebook and Instagram and all those things, it is as simple as that. You need to tell them that I follow typical global standards. There are 3 or 4 typical global standards. You say that I belong to this standard, then you are clearly letting he will accept your friend's request. Because your genetical history is known to them, on which your plants are grown, what standard, what is availability. Then they literally come down on you asking for what is the stock available to define the costing or import rates. When you work in a cooperative, it will be sharing basis. In the sense, you will share part of your profit to them so that they give you an accreditation. Your nursery is IPPS rated. Half the battle is won. A buyer like me always look for global standard and accreditation. One question is there, any nursery in India, IPPS? Sorry to say, have you ever even heard of IPPS? But correct. But in Indian nursery, I said no, we are at least 100 to 150 years behind. I want that spark from this room to come up, take that ownership that we will be counted seriously one among exporters in India. There is no one in India who developed any standard plant. No one. Let's go to the next slide. For example, sir, this is basically where most of people they can cover or something. There is conifer rich bed, like citrus and all the conifers that it's a rich area. I mean, It's a forest actually. Forest go wild there. You'll find all those forests. So what they can do, they can make that only where conifers making like area. Correct. Correct. They can be linked with it, it will be accepted everywhere. Perfect. That's how it should be. 100%. That should be the way forward. No, and every climate belt has its own advantage of growing some particular species. Don't expect, bougainvillea in Socorro. Impossible. See, there are not only 4 or 5 firms. There is a list of firms wherein we can start associating, we can start accrediting ourselves, we can bring in the experts to give us a hands-on training. It cannot be only one lecture or one time hearing and it's all done and dusted. It's a continuous process of learning. Go to next. Landscape के नाम भी नहीं है. Why I say this? It's on a sarcastic way that we are not counted as industry. Very sad. Even though we have entire world climate, we have not even pictured yet. Go to next. A video play करो. How one man is actually doing the thing. ये मशीनरी मैंने भी ले ली. Go to the next video. ये बंद कर दो. ये कम से कम 80 years to 200 year young palms है. रोड से निकाले हुए, समुद्र के किनारे से निकाला हुआ. नीचे प्लांट का पॉट देखो ना. 1.2 meter by 1.5 water. More like water tanks. Transplanted. Go to the next video. Next. Sir, they can imagine, you just make an imagination, you just think. If this much of big is your citrus, how it will look? Like in No, we will look that now, right now. Just play this. Anyway. This is Italy. Imagine this is Srinagar.
1800 घर है। ये दूर से देखने लगती है स्टैंडर्ड। आप बताओ इससे बढ़िया स्टैंडर्ड क्या हो सकती है? आप नजदीक से भी देख लोगे नीचे जाएंगे तो। So whole this town should be doing this. Only 1800 houses in that small town. It's Pinochet's town called Pisa. When we go to Leaning Tower of Pisa, while driving, this is the same climate. Look at the standard of materials. Lawrence Noblesse था वो. वही same, all are temperate. This is Italy. Sir, these plants, for example, are they in a condition they can easily lift it then? Yes. They are ready to ship. Ready to ship it. No, they are all in root balls. Road walls. In the ground. Sometimes one more technique they are using There are is sorting for it. Yes. Pot in pot, root balls in the ground. And they are all pots here. You can clearly look at it. These are quarter standard, full standard. This is full standard. Look at the size. This is everything you can see in this campus here. These are basically movable. So shiftable, completely, immediately you can shift them. And these guys are also root balled. If you give them an order, in next 3 months, it will be in your house. there are no soil use. No soil. Everyone is one of this, sir. Again, all your pines, different varieties of pines and इसलिए ताकत दिया था, ताकत लगा थे। आपको पता है ये कंसेप्ट क्या है? बड़े प्लांट होते हैं, आपको आइडिया है सर क्या बोल रहे हैं? आज की डेट में प्लांटेशन हाईवे पे बड़े लेंस वहाँ बोलते हैं, वही वहाँ हमें 10 साल वेट नहीं करना, हमें इमीडिएट यही प्लांट उठा के लाते जला तो आप पेड़ वहाँ खड़ा हो गया लैंडस्केप का, उसी का पैसा मिलता है। इसी जब आपके पास स्टैंडर्ड होगा बड़ा तभी आप कर पाओगे। फर्स्ट थिंग इज यू शुड हैव अ very quality material. Correct. Then you can excel in any landscape. Correct. Don't have investing. इसलिए इसमें ये है ये ज़्यादा दूर नहीं है बिकॉज़ आई सी जो एप्पल का है यहाँ नर्सरी आ रही है मेरे ख्याल में ये चीज़ें यहाँ पे एप्पल में हो जाएंगी स्टार्ट क्योंकि हमारा सेंट्रल एशिया का मार्केट शायद आगे ठीक है कश्मीर से आगे इसलिए कि यहाँ पे नर्सरीज है नॉन स्किन जब भी इनको फॉर एग्जांपल सेंट्रल एशिया में बेचना या कहीं और पे बेचना है थोड़ा बियर भी जो भी हॉर्टिकल्चर में वो इसी से रिलेटेड है आप बेच सकते हैं यहाँ पे बेचना है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है इसमें कॉर्पोरेट हो रहा है विचार बैटरी डाउन चेरी ऑर्नामेंटल चेरी शायद सब उसको कहते हैं चेरी को जापानीज लैंग्वेज में कहते हैं सोकुरा वो साथ कह रहे हैं फेस्टिवल उसको कहते हैं वहाँ पे हरामी फेस्टिवल क्योंकि कहते हैं 12 रोज ले जाता है जैसे कहते पूरे कंट्री को दसरा ने चेरी फेस्टिवल particularly country but tail end में और टॉप आता है पिछले बार तक मुख्तलिफ कैलेंडर इशू करता है या दुआ पे कैसा जीवन या आपकी कैसा या स्टेटस या आपकी कैसा या स्टेटस तो वो बहुत ही मेजर अट्रैक्शन है टूरिस्ट वही सारा तो हम यहाँ पे आप चल रहे हैं देख सकते हैं टूर गार्ड के पास ही है वही है ये दिन मारे मैंने को या actually the timing plants which we are
I will define at the later. We will panel at the later, then we will talk. So this is also biggest nursery in Netherlands. They produce only, they make only compound walls. Can you imagine? 1900 million dollars worth of annual compound wall. They want to understand what is compound law. हाँ, तो ये वाला चालू करते हैं। दो घर के बीच में जो दीवार रहती है, यूरोप में वो रेडीमेड बन के आता है। नीचे की जो पॉट दिख रही है, ये दिस इज कॉयर पॉट, जो लगता से बन के जाएगी। Living walls. Look at the species. This is your own species from Kashmir. Headerhelix. And how do they work in a country like Netherlands, where there is a scarcity of labor? The children with different abilities, children who are having atypical diseases, they are employed as the partners. The lady who's working there, if you look at them, they are also given equal chance to work as a Diversity in this area. different types. In China, anybody who's 70 plus is a nurseryman as a nursery labor. They are given 4 times food, 4 times drinks, and ample place to rest for all the senior citizens. They are part of the growth story of China. हमारे इधर 58 के बाद मुझे और सर को हड़ताल रहेगा। Basically a concept which is not thematic art. Basically, to keep their mental ability fit, you have to engage in something. That is the type of art. So I was only showing you in terms of opportunities. These are all the things which are going to come now into India. वहाँ जो 20, 25, 30 साल पुराना रहता है, वो चीज अभी हमारे यहाँ पे आता है. Now individual bungalows. The boundary between two bungalows is defined by a green hedge. So the hedge is ready-made here, and it is pre-grown. And here also there are standards here. Go to the next slide. But who will buy? It is compulsory. It's a government law. In our case, what we do? Go to the next slide. Next slide. Now you can run this. In terms of standards, here you can look at uniformity, availability of numbers, how they are presented. Go to the next one. The plants which are grown on a vertical frames, trellis and frames, ready to sell. Go to the machineries on the top. See. Pot is filled not by hand. Material. Big moss and the cutting. These are machineries. It's actually a pot filler. It's a pre-mixed material.
We also want to understand this. This is a big plan. Correct. Is this odd route or it is first in the front get right? What do they do is, once they achieve a standard height, 2.2 meter, 2.4 meter is the standard height, and number of branches is fixed. It is fixed. Then they actually cage the root. No, they cage the root and they put it in the ground. Every 6 months, till the plant is sold, it is shifted from one place to other place. Root ball is fixed. Root ball is proportionate to the pot size. You can sell on both conditions. One, size of the pot. Second, standardness of the tree. So what they do is, in Spain, it's only the girth of the tree. In Italy, they accept pot and the size. If I sell it in Scandinavian countries, all 7 countries to 9 countries in Scandinavia, like Copenhagen to Denmark to all Sweden, their standard is little tweaked to suit to their requirement. Standards are applicable everywhere. They will look at the size of the shape of the tree also. Every 6 months they will go going for this. Annually it's a twice exercise. Then they will go for this root pulling. Exactly, it's all machinery. Like you plant them in one row. So that is the transport shop is the minimum. Every 6 months you will be shifting them from ground to ground. It is sort of repotting only trimming the roots, not the shape. Shape is trimmed separately. We do both sides, similar yes, but we do less. Correct. Correct. But this is a large scale operation. And I was talking about these machineries in terms of shifting of pots, sizes, shifting into container. So use of machinery, putting potting. So his job is 1000 pots per day. मेरे यहाँ पे 1000 pot is 1 month का job. He does it in 1 day or maybe half a day. Go to the next slide itself. Next one. Basically, what are the small can you learn? इसके पीछे वाला स्लाइड पे जाना, इसके पीछे वाला नेक्स्ट गो नेक्स्ट दिस इज ये चाइना है, दैट वाज यूरोप. व्हाट यू सॉ टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज very matured market, Europe. This is a new entrant into the show who stole 50% of the world market by reducing the cost and price and availability of number. Just switch on this. It's a drive of 360 kilometers, only nursery. Full standard. This is a long chunk, right? With the permission of my student. This is a long chunk here, but we were in a meeting, Akas was there, I think, with LG of Delhi. He told us that if any indigenous person can supply us tulip at the cost of 40 rupees, we'll accept that rather importing at the rate of 6 rupees. Basically, indigenously we have advantage. If we can produce 100% agree to you will get market. But depends on government. Go to the next slide. Money remains in the country. Money remains in the country. That is the. इसके पीछे वाला एक स्लाइड दिखा दो. नहीं, इसका next one. This is where world is heading to. आपने जंगल जमीन पे देखा, वो भी सीधा ग्रो होते हुए. Now it is Singapore. It's called as granny plants. This is a 7 years back image. Now the whole forest, whole facade is with full forest now. They confuse plants by rotating it. They confuse plants by rotating it.
every day the plant is turning by 180 degrees rotating. So whether to grow straight or remain stunted or grow vertical, you are confusing the growth of plant by your own need. You just need, and it is possible. In Singapore, this was only one building. We used to go to Singapore to see this building. Now there are 100 buildings who have the same one. In India, it is not come. What is the material they use to stick? So this is actually a steel pot. Steel pot fixed to the your facade. It's pre-plant. It's completely pre-plant. And plant actually rotate inside this mechanism. It's gradually getting rotated. So there will be some mechanism. Machinery. Important geographic force to plant should Perfect. already be straight. Otherwise, it will bend towards The plant is getting confused whether to go horizontal, vertical, or stay instantly. You are confusing by gravity. You are confusing the gravitational force of that. It is not joke. It is not only very funny, but this is true. It's happening. Sir, in this case, we can use innovation. Thinking independent, how we can do it. Go to the next slide. And the start of innovation. Lot of your questions which you have not asked me are all part of these, details. You can actually go into it. There are a lot of e-books, lot of learning materials for all of you. No, I am leaving all the slides to you guys. It's not my own material. It's for you. Basically, there is one MSME protocol of this training. Or before, after training, you have to deposit your presentation so that it can. But before the validity, we can't give it to someone. No, I agree with your modus operandi. The only thing is the knowledge I am not taking back. I want the knowledge to spread. And we will give it to all the participants who share it. We want the knowledge to spread so that your queries and आपका inquisitiveness बढ़ेगा. One guy questioning me means कहीं ना कहीं तो आग लग चुकी है. Last slide. I think last. I now request my Go to the next slide. sir to kindly moderate this session and whatever queries are there, sir will see and we can have the. Before I conclude on, I say plant 1 crore. These are the plants. Individual plant work from 1 crore to 5 crore. It's a setup. This whole thing is one set. It's a whole setup. It is ready made. It's from 1 crore to 5 crore. This is sold in China. Next one. Go to the next one. This is China. This is individual plant wise what we can actually sell it. Go to the next slide. Sunflower can be an aesthetically pleasing garden. Go to the next slide. This is a long material. Go, let's avoid this. I have already spoken about this thing. Go, next. How tree breeding happens, how plants are exploited in the other market. It's an Indian origin plant, patented in US, sold by an Indian in US name. Go to the next slide. In terms of diversity, what India can provide us as an opportunity. Again, I spoke about prunus and different cashiers. Go on, there are 100 slides again, I think. In terms of opportunity, what our country has, what all we can grow. Many of them are tropical, subtropical, temperate. Go back one slide. This one. Tilia tomentosa is what we need to bring into Srinagar. No one tree, 1,000 tree minimum. Because this will change the whole scenario of our place. Go to the, you can run the other side.
These are all the world planned wealth in terms of what we can grow. Shrubs, ground covers, then other things which are possible in our state. Go to next. This is where it all ends. Thank you. Thank you, Mr. Another mind-blowing lecture. So, my question to you is, how do we set up a pot and pot nursery? Because I was thinking, one of my colleagues, he works in Kopwara. Now I came here. It's a riverbed, basically full of stones. So I suggested to him to plant trees, like a similar nursery there, using drip irrigation, everything. I will pause. There is a technique called you bury a pot in ground and then plant tree in another pot and place another one down in the ground and let it grow. So he can grow conifers and these things. But you have added another technique, that is where you place the mesh. Chicken mesh. Chicken mesh. Yes. Buried to the root ball. You need to standardize it one in terms of shape, size. How do you want to grow it? Regular iron chicken mesh. Simple chicken mesh. Once in 6 months, you are only changing it because chicken mesh has a life. We can't use the stainless steel mesh what Europe uses. That's too expensive. Too expensive. Then there is plastic chicken mesh. You can use that. The plastic chicken mesh becomes brittle after a year. We might have to ask Tata's where they make this cable with the plastic thing, with the brittle one. So that if they can able to deliver us or maybe somebody, maybe one of you can take the challenge to make shaped material where roots are allowed to grow. When I lift it, the entire wall comes in, I trim it down, I can put it in the back into the same place. Usually how do they do in Europe is, they shift one plant after another. So it is machinery again. That is the latest technology for the borders. They are You are talking about airports? they are replacing that. You see, airports is a Chinese topi. It doesn't work everywhere. They are saying, I have recently watched a video, they are saying that it gives That's all. Chicken mesh gives you a freedom of one for plant to grow. Second, it's easy to handle, easily available in the places where you are looking for. 6 months to 8 months. Usually what it is done is a 150 mm GSM flow. They use it as a internal material. Above that, one is GSM flow and then the mesh. So roots are very clearly visible where it is coming from. ये जब नर्सरी जब वो लोग एस्टैब्लिश करता है 150 GSM है ना आपका जीन्स पैंट की जो एक मोटापा होता है वैसा वाला क्लॉथ आजकल मार्केट में मिल जाता है इट इज कॉल्ड एज जियो टेक्सटाइल वो वैसी वाली क्लॉथ को पहले जब शुरुआत से ही वो डाला जाता है सब समझो आपका स्टैंडर्ड हाइट अचीव हो गया 1.2 का हो या 2.4 का अचीव हो गया तो दैट क्लॉथ इज ऑलवेज एडेड आई विल शेयर यू सम मोर वीडियोस हाउ इट इज एक्चुअली डन व्हाइल एक्चुअली प्रैक्टिसिंग इट वो क्लॉथ और ऊपर जो मैश है मैश जल्दी खराब भी नहीं होता क्लॉथ के वजह से हर साल में 2 बार उसको एक जगह से दूसरी जगह डालना है जब आपको एक्सपोर्ट के ऑर्डर मिल गए या इंडिया में ही सप्लाई का ऑर्डर मिल गया तो सॉइल की तो बात ही नहीं बनती सॉइल चल जाता है
और अगर कोई एक्सपोर्ट की ऑर्डर मिलती है, सिर्फ उसे उठाना है, पानी में डाल के पूरा का पूरा सिस्टम रेडी रहता है. You don't need to worry about anything. Then plants don't go into shock. You just wash it, pour it with all the coco peat or with the peat, perlite or any combination of inert material. There was once. Is this applicable to every conifers? This is applicable to everything. For example, in conifers we can see only they can't move short. They are very doomed to, for example, if there will be more root pruning, they have to remove, they will die. Even the shoot pruning, we have to be ensure that we are not doing that. Did you see that nursery thing? Half of them are all conifers. That we want to understand the value. Yes, they are using it because they cannot export soil. वो selling जो है conifer, Everything is in pot. Uprooting it from the habitat itself. No, And it is very not survive. But when we grow them, there, when we seed them in the pot, and we train right from the beginning, what they are, then the things will work for it. Correct. but uprooting from the we have to see the special demands की उसी species किस stage तक ट्रांसफॉर्मेशन करके बर्दाश्त कर सकती है we can shift वो हमारे एक्सपीरियंस पे कि हम क्यूब्रेसिस को कहाँ तक जमीन में लाके उसमें ला सकते हैं उसके बाद Maybe my experience with conifers is quite limited. Only 2-3 conifers work in southern India. So rest, I think we might explore more. In terms of somebody is interested to get into this in a serious. It's very easy to prove. They are all seed borne, 99%. because I've done it yesterday. I sent them for force. I've done Root pruning can take. Anybody has any question? I will be interested to take. Yes, yes. मैं उसके बारे में करना चाहता हूँ मतलब कोई बुक या कोई नहीं वो जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वो उसके बारे में उसमें डिटेल था फोटोग्राफ में उसको ही गूगल कर लो वो पूरा का पूरा हाउ दैट सिस्टम वर्क्स इट इज कॉल्ड एज ग्रेवी प्लांट इज अ पेटेंटेड सिस्टम उनकी पेटेंटेड वाली सिस्टम है ग्रेवी प्लांट करके कंपनी है उन्होंने पहली बार इसको किया था उसमें टेक्निक सिर्फ सिंपल है प्लांट को ग्रेविटेशन पुल से बाहर रखना है ग्रेविटी से ही प्लांट सीधा जाती है या उल्टा आता है टुवर्ड्स द सनलाइट दे आर कंफ्यूजिंग द ग्रेविटी ऑफ इट बिकॉज़ स्लोली मूविंग ऑन अ डेली बेसिस 180 डिग्री सर हमें एक्सपेरिमेंट करके कराया गया था उसको बोलते हैं क्लाइंबिंग ओह वॉल को रख के क्लॉकवर्क करके उस पर ऐसे घुमा देते करेक्ट तो वो ऊपर जाता था नीचे जाता तो उतना ही आंसर सेम टेक्निक सारे को बात मतलब तो वो मतलब कि बॉल पे हम लगा देना उसको पानी वानी कुछ देने की जरूरत नहीं एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड यहाँ पे सिस्टम ऐसा रहता है कि पानी देना या खाना देना बहुत सिंपल मैकेनिज्म है लेकिन प्लांट को ग्रो ना होने देना इन इटसेल्फ इज द बिगेस्ट टास्क सर सीडर नेस्ट कैसे ये बना सकते हो उसमें से
ये ना जो हम कैसे बना सकते हैं वो आईपी बीएसएम कैसे रजिस्टर हो सकते हैं? नहीं, स्टैंडर्ड इंडस्ट्री बनाने के लिए ना उसमें टेक्निक्स डिफाइंड है। आप गूगल करोगे तो ये डेटा आपको गूगल में भी मिल जाएगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्लान, हाउ इट इज दैट, जस्ट टाइप सिंपल वे, you will actually get this whole information, how individual species wise also you will get it। ये प्लांट, ये स्पीशीज, ये वैरायटी, इसको ऐसे किया जाता है। एक स्टैंडर्ड वे है, वो प्रोसेस भी है, आपको ये डेटा मिल जाता है। उसको कैसे किया जा सकता है ये आईपी बेस? पहले आपको इसलिए इंडिया में कोई अभी करके Sir, now my कैसे करेंगे? One is I am available for the media, I am also available on the phone. But only thing is where I can help them, what expertise you are looking at. On a large scale, different aspects I opened up so that your brain starts, tickling. Where the association can be formed or who can actually help us to take it to the next level, we might have to talk it offline. Maybe this is not the correct forum to think of. Yeah. Something like this. Yes. There's still some light. So sir would like to answer because and all other trainees who sat patiently for their students, because I was looking forward for this lecture for you. I had arranged it for these also, but you were in my mind when I invited you, sir, 10 days back. And you kindly consented to visit us here, and you made it today, and you had a long day. You must be tired, sir. So, I speak on behalf of the and the university and MSME, thank you. It was a wonderful